Hello students, welcome to economics classes. Dear students, today I am going to start the chapter number 4 of statistics for economics, and the name of chapter is organization of data. Under this topic we will understand some important concepts. तो बेटा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा के अंदर द फर्स्ट वर्ड इज क्लासिफिकेशन, यानी क्लासीफाई करना. डेफिनेशन क्या होगा बेटा? इट इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा इनटू सीक्वेंसेस and groups according to their common characteristics. What are the objects of classification? Beta, this chapter is also important for the MCQ. Objects of classification: to facilitate comparison. Classification of data enables one to make comparison, draw inferences, यानी results को draw करना, and decide facts. This is not possible in an unorganized or unclassified data. So, to make comparison, data must be classified. To study relationship, classification helps in finding out cause-effect relationship. For example, demand falls when there is a rise in general price level. So, we have to prove through the classification. To present a mental picture मतलब क्लियर पिक्चर, क्लैरिटी होनी चाहिए. समराइज्ड डाटा कैन इजिली बी अंडरस्टूड एंड रिमेम्बर्ड. फोर्थ, टू सिंप्लीफाई द फैक्ट्स इन ए सिंगल फॉर्म. क्लासिफिकेशन प्रोसेस एलिमिनेट्स unnecessary details and makes the mass of compiled data simple, brief, logical and understandable. And last point बेटा, to prepare the basis for tabulation. यानी क्लासिफिकेशन हम करते इसीलिए हैं so that we can make table from this. Classification prepares the basis for tabulation and statistical analysis of the data. Unclassified data cannot be presented in a table. तो बेटा ये मेरा सारा ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्लासिफिकेशन था. अब बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन. Classification should be suitable to inquiry. It should match the objective of investigation. दूसरा, unambiguous, not confusing, exhaustiveness, everything covered, flexible, ready to accept the changes, mutually exclusive, data classes must not overlap, homogeneity, data should be homogeneous. अब बेटा ये क्या था मेरा characteristics of classification. अब next बेटा methods of classification. This is also very important for the MCQ. पहला, geographical classification. Data is classified according to the geographical area such as countries, states, cities, districts, colonies, etc. These are classified either in alphabetical order for the reference. Chronological classification. Data is classified with respect to different periods of time. जब टाइम की बात करेंगे तो chronological होगा. These are classified normally in ascending order of time. Third, qualitative classification according to attributes or according to qualities. Data is classified on the basis of descriptive characteristics or on the basis of attributes or quality. No numeric value, nationality, gender, habits, caste, these are all related this. अब बेटा मैं अगर आपको एक चार्ट बना के दिखाऊं कि हाउ डाटा कैन बी क्लासिफाइड, तो बेटा देखो ये पॉपुलेशन है, दो फोल्ड में डिवाइड किया, मेल फीमेल. मेल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड. एम्प्लॉयमेंट को दो हिस्से में डिवाइड किया, मैरिड अनमैरिड. अनएम्प्लॉयड में मैरिड अनएम्प्लॉयड. फीमेल में सेम बेटा, एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयमेंट, मैरिड अनमैरिड, मैरिड अनमैरिड. तो बेटा ये जो चीज था मेरा, ये टू फोल्ड था, टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन यानी क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन. और जब टू फोल्ड से ज्यादा, इसको हम लोग बोलते हैं मैन्योफोल्ड क्लासिफिकेशन. और बेटा लास्ट मेरा है क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन. द कलेक्टेड डाटा आर ग्रुप्ड with reference to characteristics which can be measured and numerically described such as height and weight. So dear students,
Note all these in your register. Thank you.